Dear students, in 9th standard Sanskrit chapter 2, Kulasya Acharah. Kulasya Acharah means family tradition या तो family conduct. Right? Up to now we have seen in it there is a child of Chataka and he is very much thirsty. And according to the tradition of the Chataka race, what is there? They should drink only the rain water. When there is rainy season, they keep their beak open and the whatever drops of rain goes into it, they drink it. And after the rainy season, they do not drink any water. Okay, any water means not of the pond water or the water which is easily available. Right? So here there is a child of Chataka and he is very much thirsty, and as he is very much thirsty he is not able to bear the thirst, and so he goes near his mother and says the mother that he is very much thirsty, and so he is going to drink the water of the pond. As he is not able to see the clouds in the sky, so rain is not going to be there in nearby time, and that's why he is going to drink the pond water. At the time, the mother advises him that, dear son, we can only drink the rain water. We cannot drink the pond water, and this is our tradition, family tradition. Right? Up to now, student, we have done. Now we go to second stanza on page number 5. Second paragraph. Chataka Shishuhu Kathayati. Amba Mahati me Trusha. अधुना आकाशे मेघान् न पश्यामि कदा मेघः वर्षिष्यति कदा च अहं मेघजलं पातुं शक्नोमि इति न जानामि अतः तृषया पीडितः अहं तडागजलं पातुं गच्छामि. So here in this paragraph, what is there? Chataka Shishuhu Kathayati. Kathayati means says. The child of Chataka says, क्या? अम्ब, ओ मदर, या तो डियर मदर, महती में तृषा. महती means very much. I am very much thirsty. अधुना आकाशे मेघान् न पश्यामि. आकाशे means in the sky. मेघान् means cloud. Na pashyami means do not see. At present, I do not see the clouds in the sky. Kada megha varshishyati, kada च अहं मेघजलं पातुं शक्नोमि इति न जानामि. Kada means when. Megha means rain. Varshishyati means fall. Kada again means when. Meghajalam patum shaknomi will be able to drink. Iti na janami. Na janami means don't know. So what he says? I don't know when the cloud will shower the rain and when I will be able to drink the water of the cloud. अतः तृषया पीडितः अहं तडागजलं पातुं गच्छामि. अतः means therefore. तृषया पीडितः means suffering from thirst. तडागजलं पातुं गच्छामि. गच्छामि means going. Tadaga patum means to drink the pond water. Therefore, I am going to drink the water of the lake or the water of the
pond. थर्ड पैराग्राफ समझ में आया स्टूडेंट्स? क्या कहा इसमें बच्चे ने, चातक के बच्चे ने कि मम्मी मुझे बहुत प्यास लगी है, अभी मैं आकाश में बादल नहीं देख रहा हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं पानी पी पाऊँगा और मैं बहुत थर्स्टी हूँ, बहुत प्यास लगी है, इसलिए मैं तालाब का पानी पीने जा रहा हूँ. नाउ थर्ड पैराग्राफ. जननी पुनरपि चातकशिशुं बोधयति. बाल न अयम् अस्माकं कुलाचारः. कुलाचारः सदैव रक्षितव्यः एव. अतः त्वं तडागजलं पातुं न अर्हसि. तृषायाः सहनं कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षां कर्तुम् अर्हसि त्वम्. क्या कहा उसने, मम्मी ने? जननी पुनरपि चातकशिशुं बोधयति. जननी मीन्स मदर, पुनरपि मीन्स अगेन, चातकशिशुं चाइल्ड ऑफ चातक, बोधयति. बोधयति मीन्स एडवाइसेस. The mother again advises the child of Chataka. Bala, O my son, महति न अयम अस्माकं कुलाचारः. कुलाचार means family tradition. This is not our family tradition. कुलाचारः सदैव रक्षितव्यः एव. रक्षितव्य means protected. The family tradition should always be protected. अतः त्वं तडागजलं पातुं न अर्हसि. न अर्हसि means not drink. Therefore, you could not drink the water of the lake. तृषयाः सहनं कृत्वा मेघस्य प्रतीक्षां कर्तुम् अर्हसि त्वम्. Right? Sahanam means bearing. B-E-A-R-I-N-G, bearing. Trushya means thirst. Meghasya pratiksha means wait for the rain. Right? So what mother says in this line? You should bear the thirst and wait for the rain water. Right? तो इधर मम्मी ने कहा कि जो ट्रेडिशन है फैमिली की वो हमको प्रोटेक्ट करनी चाहिए. और अभी इसलिए तू तालाब का पानी नहीं पी सकता, तुझे अपनी जो प्यास है वो सहन करनी है और यू हैव टू वेट फॉर द रेन. ऐसा मम्मी ने उसको कहा. नाउ फोर्थ पैराग्राफ. जनन्याः कथनम् अश्रुत्वा चातकशिशुः तडागजलं पातुं तडागं गन्तुं निर्गच्छति. मार्गे परिश्रान्तः स यदा एकस्य कृषकस्य गृहस्य समीपे तिष्ठति तदा तात पुत्रयोः वार्तालापं शृणोति. अब बच्चे ने क्या किया? जनन्याः कथनम मीन्स वर्ड्स और एडवाइस. अश्रुत्वा मीन्स नॉट हियरिंग. चातकशिशुः तडागजलं पातुं तडागं गन्तुं निर्गच्छति. द चाइल्ड ऑफ चातक क्या किया उसने? तालाब का पानी पीने के लिए वहाँ से चला गया. सो व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन? Not paying the attention to the advice of the mother, the child of Chataka goes to the lake to drink the water of the lake. मार्गे परिश्रान्तः स यदा एकस्य कृषकस्य गृहस्य समीपे तिष्ठति तदा तात पुत्रयोः वार्तालापं शृणोति. क्या हुआ बाद में? वो जा रहा था ना तो तालाब दूर था और बच्चा था, इसलिए उड़ते उड़ते थक गया. इसलिए क्या किया उसने? एक फार्मर का घर था, उसके पास में वो बैठ गया. ओके, सो व्हाट विल बी द ट्रांसलेशन? मार्गे परिश्रान्तः मीन्स टायर्ड. स यदा एकस्य कृषकस्य गृहस्य समीपे तिष्ठति. एकस्य मीन्स वन, कृषकस्य मीन्स फार्मर.
गृहस्य मीन्स हाउस, समीपे मीन्स नियर, तिष्ठति मीन्स सिट्स. तदा तातपुत्रयोः वार्तालापं शृणोति. तातपुत्रयोः, तात मीन्स फादर and पुत्रयोः means son. वार्तालापम means conversation. शृणोति means hears. So what will be the translation? On his way, when he was tired, he stands near a farmer's house and hears the conversation between the father and the son. Right? So what is the conversation? Last paragraph of that page, page number 5 का last paragraph. कृषकः वृद्धः मरणासन्नः च आसीत्. कृषकः फार्मर, वृद्धः ओल्ड, मरणासन्नः on his deathbed. आसीत् means was. The farmer was old and was about to die. तस्य समीपे स्थितः तस्य पुत्रः तस्मै कृषकाय कथयति. और वो अपनी डेथ बेड पे था ना, इसलिए उसके बच्चे उसके नियर थे, पास में थे. तो उन्होंने, बच्चे ने कहा, तस्य समीपे स्थितः मीन्स द सन नियर हिम. तस्मै कृषकाय कथयति, टेल्स द फार्मर. ओके, क्या? हिज सन who was standing near him tells the farmer. क्या कहा? तातः अद्य मार्गे मया धनस्यूतः प्राप्तः. तस्य दर्शनात् आनन्दः जातः. तेन मदीयं दारिद्र्यं नष्टं भविष्यति इति विचार्य धनस्यूतग्रहणाय अहं हस्तं प्रसारयम. राइट? क्या कहा उसने पापा को? अद्य तात ओ फादर, अद्य मार्गे मया धनस्यूतः प्राप्तः. धनस्यूत मीन्स द बैग ऑफ मनी, द मनी बैग. राइट? प्राप्तः मीन्स फाउंड. क्या कहा उसने? ओ फादर, टुडे a money bag was found by me on the way. Means I found a money bag on my way. तस्य दर्शनात् आनन्दः जातः. तस्य दर्शनात् means by seeing it. आनन्दः जातः means I was very much delighted. Okay. क्या? तस्य दर्शनात्, by seeing it I was very much delighted. तेन मदीयं दारिद्र्यं नष्टं भविष्यति इति विचार्यं धनस्यूतग्रहणाय अहं हस्तं प्रसारयामि. मदीयं means my. दारिद्र्यं means poverty. नष्टं भविष्यति, नष्टं means will be over. विचार्यम means thinking. धनस्यूत ग्रहणाय to take that money back. हस्तं प्रसारयम means I reached out my hand. So what will be the translation? Thinking that my poverty will be removed by it, I reached out my hand. किंतु तदैव मया भवदीय उपदेशः स्मृतः. जैसे ही मैं लेने के लिए हाथ मैंने किया, तो क्या हुआ? बेटे ने कहा कि मुझे आपका उपदेश याद आया. उपदेशः means preaching, स्मृतः means remembered. So what he says? But immediately I remembered your advice or your preaching. अन्यस्य धनस्य ग्रहणम् अस्माकं कुलाचार न, अतः अहं तं धनस्यूतं तत्रैव अत्यजम्. क्या कहा उसने बेटे ने?
अन्यस्य धनस्य ग्रहणम, अन्यस्य मीन्स अदर, धनस्य मीन्स वेल्थ मनी, ग्रहणम मीन्स टू टेक, न अस्माकं कुलाचार, नॉट अवर फैमिली कंडक्ट और ट्रेडिशन, अतः अहम तम धनस्यूतम तत्रैव अत्यजाम, देयरफॉर मैंने क्या किया, वो जो धन की बैग थी वो वहीं की वहीं रहने दी. सो ट्रांसलेशन, it is not our family tradition to take the money of others, so I left the money bag there only. So student, हमने यहाँ तक किया, राइट. बच्चे ने देखा कि फार्मर का बेटा गरीब है फिर भी पैसा नहीं ले रहा है. उसको अपने पापा ने जो कहा है कि फैमिली कंडक्ट जो हमारी है वो बराबर हमको रखनी चाहिए, उसको फॉलो करनी चाहिए. तो वो बेटा गरीब है फिर भी वहीं वो अपना धन की जो बैग है वो रहने देता है, लेता है नहीं. सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर डियर स्टूडेंट्स will be done in next lecture. Thank you.